अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन और हमारा ये यूनिट नंबर 2 है। और हमारे इस चैप्टर का नाम है क्लासिकल एंड मॉडर्न फ़िलासफ़िकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन पार्ट 1। और प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफ़ला ख़ान हूँ और हमारा कोर्स कोड का नाम है 8609। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है आपके सामने। इसमें क्या है? आइडियलिज्म इज़ अ philosophical approach that has as its central tenets that ideas are the only true reality, the only thing worth knowing. आगे हमारे पास आता है प्लेट्यू, फादर ऑफ आइडियलिज्म, exposed this view of about 400 years BC in his famous book The Republic. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ये है, टू अंडरस्टैंड ट्रुथ वन मस्ट परस्यू नॉलेज एंड आइडेंटिफाई विद द एब्सोल्यूट माइंड। आगे हमारे पास है द क्रूकल emphasize is subject matter of mind, literature, history, philosophy and religion. फिर हमारे पास आता है द अदर एशियन ग्रीक philosophy is realism. Realists believe that reality exists independent of the human mind. The ultimate reality is the world of physical objects. आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ये है द रियलिस्ट करिकुलम emphasize the subject matter of the physical world, particularly science and mathematics. अगला हमारा पॉइंट है ये है टीचिंग मेथड फोकस ऑन मिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक स्किल्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिएक्टेशन। आगे हमारे पास आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। नंबर 2 हमारे पास है कंपेयर आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। नंबर 3 हमारे पास एनालाइज करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है ये है डिस्कस द मेन टीनेट्स ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। और नंबर 5 हमारे पास है वैल्यूएशन द रोल ऑफ रियलिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे हम शुरू करते हैं आइडियलिज्म से। ये पहले हमारे पास आइडियलिज्म के बारे में आ रहा है ये है आइडियलिज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, originating in human nature itself, continuing from the primitive man to his present counterpart in some modified formal the other. अगला पॉइंट हमारे पास है फ्रॉम देन और manifests and point it is accurately represented by the term idealism, which means that the theory attached greater importance to idealist ideas than of acts in this world. आगे हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बारे में आ रहा है यह है चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म। इसमें क्या है ये है इट हैज़ ऑलवेज बीन बिलीव दैट आइडियलिज्म इज़ द फिलोसफिक थ्योरी विच इज़ अ कंप्लीट contradiction of the theory known as realism. Idealism has the following characteristics। की characteristics हम देख रहे हैं वो नंबर 1 पे क्या आ रहा है वो है यूनिवर्स subsets within the spirit or mind. According to this philosophic theory, the entire world is fundamentally of the nature of spirits or mind, which
accounts for its being called idealism. नंबर टू हमारे पास है ये है technological explanation of universe opposed to the mechanistic explanation of the universe. The idealists turn to a teleological theory which holds that human life and natural processes have a common objective which both is simultaneously trying to achieve. They do not object to or reject science, but for them, the scientific explanation of the universe is not the last word on the subject. The standpoint is best explained by the axiologic attitude. बस नंबर पॉइंट थ्री ये है synthesis between man and nature. It becomes inevitable for the idealist to believe that there is harmony between the natural processes and human activity. Both man and nature are busy in working out a common destiny. आगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ये है जी टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म. अब ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. जनरली स्पीकिंग देयर आर मैनी varieties of idealism in vague but the more prominent one can be conveniently listed as follows. नंबर वन क्या है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. नंबर टू क्या है फेनोमिनलिज्म एंड नंबर थ्री क्या है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. ये है आइडियलिज्म इन एजुकेशन. ये क्या है एवर सिंस नॉलेज dawned in human mind, man has been thinking about problems ontological, epistemological, ecological and axiological. फिर है psychology in the beginning was concerned with the nature of the mind and the process of consciousness. अगला पॉइंट है द जॉब ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द यंगर जनरेशन वॉज जनरली ensured to these men of letters. अगेन पास है नेक्स्ट पॉइंट ये द स्टेट supported finance but not interfere in the process of education. फिर पास है society was generally governed by the teachings of these great scholars, though the administrative machinery was almost everywhere in the hands of the state. बस नेक्स्ट पॉइंट ये है एम्स एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन. ये है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. फिर है बस द आइडियलिस्ट्स बिलीव दैट मैन इन गॉड्स फाइनेस्ट एंड अल्टीमेट क्रिएशन. फिर है सेल्फ रियलाइजेशन. फिर है डेवलपमेंट ऑफ वेल पावर. फिर है सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर. फिर है कल्चरल डेवलपमेंट. फिर है एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज़. आगे हमारे पास है आइडियलिज्म एंड करिकुलम. ये है जी एक्सप्लेनिंग द आइडियलिज्म बेस्ड ऑफ करिकुलम एज द imparting of practical and cultural heritage to the child along with his self and personality development. आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ये idealists insist on emphasis being placed on the study of humanities such as literature, art, religion, morality, etc., along with the teaching of science. बस नेक्स्ट पॉइंट है ये in order to develop skills for such activities educationists advocate teachings of
literature, art, music, various kind of handicraft and manual skills, science, mathematics, history, etc. हमारे पास है आइडियलिस्ट, आइडियलिज्म एंड द एजुकेटर्स. अब ये क्या होता है इसे देखते हैं. ये क्या आइडियलिस्ट्स पैटर्न ऑफ एजुकेशन ग्रांट द हाईएस्ट place to the educator and conceives of the educator and educant as two parts of an organic place. फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है द एजुकेटर creates a specific environment for the educand's development and provide guidance so that the later may progress towards perfection and a rounded personality. The next point is the educator inspires the educants to realize its ideas of truth, goodness, and beauty, and guidance guides him along the path to its realization. आगे पास है आइडियलिज्म एंड एजुकेशनल मेथड. ये क्या है जी. द आइडियलिस्ट्स methodology in education lays special stress on the three following process. नंबर 1 क्या है इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 क्या है एक्टिविटीज़, नंबर 3 क्या है एक्सपीरियंस. आगे हमारे पास है इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द foregoing account that idealists believe the experiences of both the educator and the educants to be of great importance. Both of them should be active and they should indulge in the manual exchange of experience so that they can progress. फिर है जी the teaching method should be such that child should recognize it as a model of self instruction. आगे मेरे पास आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन. ये है डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंसर्निंग educational method, and some people feel that idealists are in complete opposition to the new naturalists new naturalists. For the lecture believe in complete freedom while the former insists on discipline. आगे हमारे पास है आइडियलिज्म इन कंटेम्पररी एजुकेशन. ये क्या है वेदर एंड हायर एम्स, वाइडर एंड हायर एम्स. इसके ये है जी वाइडर एंड हायर एम्स. फिर है द आइडियल टीचर. फिर है इंटीग्रेटेड एंड म्यूटिलाइटेड करिकुलम. फिर है मॉरल एजुकेशन. फिर है सेल्फ डिसिप्लिन. फिर है साइकोलॉजिकल मेथड्स. अगला है हमारे पास द फॉलोइंग disadvantages of the idealists psychology of education. ये है जी यूटोपियन एम्स. फिर है जी थियोरेटिकल मेथड्स. फिर है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. फिर है निग्लेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और फिर है टीचर सेंटर्ड. अगला हमारे पास जो हो रहा है जो टॉपिक वो है रियलिज्म. ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रियलिज्म को आप गौर से देखें. ये है रियलिज्म इज द थ्योरी दैट होल्ड्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज रियल. फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिविज्म. इसमें है द चीफ टेनेट्स ऑफ रियलिज्म. वो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज. फिर है क्वालिटीज आर इनहेरिट in known objects. Where knowledge does not affect the object or its qualities. Where knowledge of object is direct. Where objects are common. Where relation between objects and thoughts. Where types of realism. ये नेवी रियलिज्म. फिर है रिप्रेजेंटेशंस. फिर है न्यू
रियलिज्म, फिर है क्रिटिकल रियलिज्म। आगे मेरे पास आ रहा है कंपैरिजन ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ये क्या है? डिफरेंस इन epistemology, idealism and realism, difference in the following respect on the various questions of epistemology। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ऑब्जेक्ट्स आर नॉट what they appear to be since their knowledge is indirect, but realism maintains the objects are precisely what they appear to be। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ऑब्जेक्ट्स आर नॉट what they appear to be since their knowledge is indirect, but realism maintains that objects are precisely what they appear to be। फिर है हमारे पास अगला पॉइंट ये है मेटा फिजिकल डिफरेंसेस। फिर है अगला पॉइंट ये है डिफरेंस ऑन कॉस्मोलॉजी। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ये है रियलिज्म इन एजुकेशन। ये क्या है? जिसमें कौन कौन आए थे? एरास्मस, ये 1446 से 1537 में इन्होंने इस पर इनकी इन्होंने काम किया, इनकी लाइफ थी। फिर थी रिबेलीज 1483 से 1533 तक। फिर है जॉन मिल्टन 1608 से 1674 तक इनका काम था। फिर है माइकल डी मोंटीजन 1533 से 1592 तक। फिर है रिचर्ड मॉल कास्टर इन 1531 से 1621 तक काम। फिर है फ्रेंकियस बैकोन इन 1561 से 1626 तक काम। फिर है रेटिका, ये 571 से 1635 तक। फिर है पोमोमेनियस 1592 से 1670 तक काम किया। फिर है जोहन फ्रीडरिच हेर्बर्ट, इसने 1776 से 1841 तक काम किया। फिर है हार्बर्ट स्पेंकर, इन्होंने 1820 से लेकर 1903 तक काम किया। आगे मेरे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये है एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या आता है? नंबर 1 क्या है हमारे पास? एक्टिविटीज़ कंसर्न विद लैंग्वेज। फिर हमारे पास आता है नंबर 2 पे एक्टिविटीज़ कंसर्न विद हाइजीन। फिर हमारे पास नंबर 3 पे आता है सिटीजनशिप एक्टिविटीज़। फिर हमारे पास नंबर 4 पे ये है ऑर्डिनरी सोशल एक्टिविटीज़। फिर हमारे पास नंबर 5 ये है लेजर एक्टिविटीज़। फिर है नंबर 6 पे एक्टिविटीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ। फिर हमारे पास नंबर 7 ये है रिलीजियस एक्टिविटीज़। फिर है नंबर 8 एक्टिविटीज़ कंसर्न रेस प्रिजर्वेशन। फिर हमारे पास नंबर 9 ये है वोकेशनल बिहेवियर एक्टिविटीज़। फिर नंबर 10 पे वोकेशनल एक्टिविटीज़। आगे मेरे पास आता है करिकुलम। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट दैट चाइल्ड शुड बी अलाउड टू चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी फ्रॉम detailed curriculum। फिर है he should be taught what is useful in his life। फिर है learning according to one's ability result in success in practical life subjects should be related to one another। फिर है नेक्स्ट पॉइंट ये है they should be planned according to the needs of the society। अगला पॉइंट है ये है एजुकेशन शुड enable the students to adjust to changing social circumstances। फिर है phrases such as knowledge for the sake of knowledge, art for the sake of art, etc. are meaningless। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ये है द करिकुलम शुड हैव utility subjects such as literature, art, music, dance, etc. are unnecessary। The curriculum should lay emphasis upon science subjects, physics, chemistry, biology, astronomy, etc। आगे हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब इसमें क्या होता है ये पर देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म टू एजुकेशन। फिर एजुकेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट।
फिर है प्रैक्टिकल बाइस, फिर है प्रैक्टिकल एम्स, फिर है वाइडनिंग ऑफ स्कोप, फिर हमारे पास है साइंटिफिक टेक्निकल साइंटिफिक टीचिंग मेथड्स, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, फिर हमारे पास है सेंस ट्रेनिंग, फिर फिर हमारे पास है रियलिस्टिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारे पास है टू मच एम्फोसाइज ऑन ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमारे पास है टू मच एम्फोसाइज ऑन फैक्ट्स, फिर हमारे पास पॉजिटिविज्म एंड मेरोकलिज्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। फ़ी अमानिल्लाह, चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आएगा। आगे हम मिलते हैं नए चैप्टर पे। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, और गुड लक टू योर फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स।